Welcome to Daily Market Analysis, Nifty, Bank Nifty and Top Stocks. So starting things off with Nifty's daily chart, अगर मैं zoom in करता हूँ, then what we can see is that it's actually the highest close that Nifty has ever made. Previously, okay, the previous ATH close or the previous highest close was this candle, and that was at 17,377. Today it's closing at 17,380, which means plus 3 point का move किया है उसने on a all time high close basis, which is good. इसने नया all time high भी create किया है by around 9 points. ठीक है. So while the ATH created was 9 points higher, the close that it made was 3 points higher, which is fine. I think that's not a terrible ratio. ओवरऑल अगर हम लोग चार्ट देखें तो देख सकते हैं कि सेकेंड हाफ में काफ़ी सेलिंग आ गया था, एंड आफ्टर दैट इट वाज एबल टू सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट दिस लेवल राइट हियर अराउंड 370 के आसपास. देन इट वाज एबल टू बाउंस अप. द गैप वाज नॉट ऑलमोस्ट लाइक द गैप वाज नॉट प्रॉपरली फिल्ड पर से, बट दैट गैप फिलिंग वाज डेफिनेटली अटेम्प्टेड. और निफ्टी के एक्चुअली 5 मिनट चार्ट की बात करते हैं, देन what we see here is a very linear move that was accelerated after the second half fall. So around 12:30 के बाद एक फास्ट गिरा और उसके बाद इट wasn't able to recover, right? Compared to बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं, then that is not the case. Bank Nifty also saw a linear fall. After 12:30's dip, we did see a recovery, like a V-shaped recovery, and then it was in the same zone. So there's a bit of difference in how Nifty and Bank Nifty look on the 5 minute chart. अगर daily chart करो Bank Nifty का, then we are seeing a spinning top kind of candle. And spinning top candle कैसा है? I mean, see, we are still seeing Bank Nifty like gradually going down only. हम लोग नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया और थोड़ा सा मतलब माइनर ऊपर है. तो ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है अब तक. फिलहाल इट्स डेफिनेटली नॉट गेनिंग स्ट्रेंथ. दैट सेड, दिस वाज अ लो, दिस वाज अ लो, दिस वाज अ हाई, दिस वाज अ हाई. सो हायर हाई हायर लो है, बट नॉट बाय दैट मच. देयर इज नॉट मच स्ट्रेंथ. And right now this gap that we see here, okay, this gap that we see here, that is possibly acting as a resistance. So 36,700 का लेवल हम लोग ने कल आई बिलीव बात किया था, that still holds. आज का हाई था 36,756 I believe. And on the low side, okay, on the low side, not only is today's low important, but I still hold this level to be very important, 36,455. So देखते हैं कैसा चलता है. अगर वो सब levels तोड़ सकता है, then 36,800 on the upside, and on the downside possibly this level right here, which would possibly 36,300 के आसपास होगा शायद. So those are the levels I would personally be looking out for. Now coming to the top stocks. Okay, top stocks में Reliance पे चालू करते हैं. Reliance में we can see that it's actually at the previous all time high level. Okay, previous all time high level right here. And ऊपर से थोड़ा selling pressure आया है तो नीचे आ गया है. And it's actually a kind of nasty candle if you can call it that. Right? Okay, open यहाँ पे हुआ था. High बनाया and then it went down and closed right around the low. That's not very confidence inspiring in my opinion. So not only has it actually cleared that gap, filled this gap, but it's also retesting the previous all-time high, which is not a pleasant sign. But oh well, I think it's not the end of the world either. Reliance में अगर कुछ strength है तो definitely it can just move up. I don't think that these candlestick patterns are uh, all that are super important in case of Reliance, because we have seen very contradicting movements. For example, this candle, okay, this candle, we saw a green candle here and then we saw a massive red candle. उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बनाया और फिर ऊपर गया. राइट, नॉर्मली वन वुड से कि वो जो बड़ा रेड कैंडल था दैट सेलिंग प्रेशर, बट दैट्स नॉट रियली व्हाट हैपेंड, राइट? Here also we saw some resistance and then it was able to come up. So Reliance may, there are obviously cases where it's shown selling pressure and come down, but that is not always the case, is what we need to understand. Next up is HDFC Bank. HDFC Bank में हम लोग देख सकते हैं, if it just loads for me here, I'm waiting for it to load. EOD basis तक देख देते हैं हम लोग फिर. हाँ, this is what it looks like, 1548. So 1550 का जो support है that has been broken. Now we are retesting these lows that we saw here. ठीक है, these lows that we saw here. So overall not extremely pleasant.
So the next level that I would personally be looking at is somewhere around 1540 ish, and then after that 1530 वो कंप्लीट यहाँ पे ही रीटेस्ट हो जाएगा. आई बिलीव व्हेन दिस वाज द केस मार्केट वाज जस्ट अंडर 17,000 और अप्रोचिंग 17,000. सो वो लेवल पे शायद वापस आ सकता है. मार्केट की बात नहीं कर रहा, एच डी एफ सी बैंक की बात कर रहा हूँ, बट मार्केट भी आ सकता है, वाई नॉट, राइट. नेक्स्ट अप इज इन्फोसिस. इन्फोसिस में हम लोग देख सकते हैं देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट हैपनिंग हियर बिकॉज वी कैन सी गुड बाइंग हैपनिंग फ्रॉम अराउंड 1670 1675 टू अराउंड 1680. सो वो एक अच्छी साइन है मेरे ओपिनियन में. पहले यहाँ से बाउंस किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर यहाँ से बाउंस कर रहा है. सो पॉसिबली अगर ये 1707 के आसपास के ऊपर अगर रह सकता है देन इट माइट बी अ गुड साइन इन माय व्यू. नेक्स्ट अप इज एच डी एफ सी. एच डी एफ सी इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट कैंडल ईदर. बिल्लियाँ भी काफ़ी एक्साइटेड है लगता है अबाउट एच डी एफ सी. But we can see that the high that it made was actually right around the open, and that is 2869. एंड उसके बाद एकदम शार्पली रेजिस्टेंस लेके आया है, और ये जो 2800 का रीटेस्ट किया है उसने, देन इट वाज एबल टू गो अप अराउंड 10 पॉइंट्स इन, या आई मीन दैट्स अबाउट इट. उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया. अगर ये लेवल टूटता है देन पॉसिबली 2790 ish, the level that is hovering, where my cursor is hovering on, might be important. Next up is ICICI Bank. ICICI Bank is holding this level well. कल हम लोग ने बात किया था कि ये वाला जो क्लस्टर जैसा है, कंसोलिडेशन जैसा है, वो जोन इम्पॉर्टेंट है. एंड देन ऑब्वियसली दिस गैप विच इज देयर इज इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स सी इफ दोज आर हेल्ड. नेक्स्ट अप इज कोटक बैंक. कोटक बैंक हम लोग देख सकते हैं इट्स रियली जस्ट हाई इन द स्काई. 1867 हो गया है. वी हैव बिन स्पीकिंग अबाउट कोटक बैंक फॉर ऑल ऑफ दिस. ये जितना भी पूरा क्लस्टर है इसके सब के टाइम पे हम लोग ने बात किया है कोटक बैंक का. एंड नाउ इट इज़ रियली डूइंग क्वाइट वेल. अगर ये जोन के आसपास हम लोग ने अगर लॉन्ग किया होता कोटक बैंक, देन वी वुड बी सिटिंग ऑन जस्ट अंडर 10% रिटर्न्स in the matter of a in the matter of 20 or so days, which is pretty good, right, for a big top 5 stock. So कोटक बैंक काफ़ी अच्छा दिख रहा है. अगर ये होल्ड कर पाया, मोमेंटम ऐसा ही रहा, then definitely I do foresee it at least retesting, at least testing 1900 very soon, if not 2000. थोड़ा सा far dated जैसा हो जाएगा, but still. Next up is sorry for that, next up is SBI. SBI ने वो 435 के क्लस्टर को क्लियर करने की ट्राई की, बट इट वाज अनेबल टू डू सो. So let's see if it is able to actually clear that now. And then comes Axis Bank. एक्सिस बैंक थोड़ा डिसेंट है, आई वुड से 780 के आसपास से बाउंस किया है, बट 800 कंप्लीटली रिजेक्ट किया है. सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द 800 साइक लेवल एज ऑफ नाउ. And as far as our swing trade updates go, the biggest one is Motherson Sumi. Yeah, I think 2 week पहले का swing trade है, and that is up around 4% today. Apart from that, IDFC First Bank is up around 2.5% today. Glenmark is up 2.5% today. And the others are up 1%, 1ish%. अगर top stocks की बारे में बात करें, this is what the broad market looks like. Mid caps looking good. My throat is a little sore. Media is up quite a lot. Possibly Z के वजह से होगा ये. I think Z had their important meeting or something today. Board meeting या कुछ था. And in terms of the overall stocks, we can see IndusInd is up, HCL is up. Some interesting stocks here. I don't think top 5 में से कोई भी है. हाँ, कोटक बैंक है, उसके अलावा कोई नहीं है. And for the losers, we've got HDFC from the top 5 and HDFC Bank from the top 5. But losers utne hai nahi, so I think that's fine. So yeah, we can see Z is up 40%. Crazy. Okay, 40% ऊपर है Z. So if you would have bought Z Limited yesterday, अगर 1 लाख के शेयर्स खरीदे होते तो 40,000 एक दिन में मिल जाता, which is ridiculous to think about. But ठीक है, I'm sure there were some quote unquote lucky people who might have done that. Hathaway is up around 7%. It kind of sucks because my internet does not reflect that sort of strength. But ठीक है, that's what the market looks like. That's it for this one. See you in the next, and happy trading.